अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद एक बहुत ही ख़ास मेहमान who is a financial analyst and also a rapper from KP, and I haven't had the pleasure of talking to someone from that side in this particular industry, so very exciting to have him here with us today. Mustafa Kamal, I believe Fortitude is what you generally go by, so thank you so much for being part of the show. Thank you. Fortitude is basically my crew band's name. Yes, band's name. Yes, rap के अंदर bands होते हैं? So how did that work? It started as, I would say, it started as a crew initially. Right. There are three of us. So we studied in the same school, and एक ही area में brought up हुए हैं. तो there's three members. One is Shakar. Then there's Shumail Alam Khan. Shakar and Shumail are brothers. Right. And then there's me, an outsider who clicked in with them. And one is basically producing music. The other one started with the rapping game, and I was essentially not part of it initially, but then I was fond of playing piano a lot. Right. So uske वजह से मैं कहा चलो I'll key in my tunes from my side, and then they'll do their own part. So we started off as a crew. Right. But generally at that point, bands were the thing. Yeah, absolutely. This is early 2000s, right? So yes, it's very EP and Call and Aro and Noori and yeah, absolutely. So Mustafa, I'm going to start this off with just sort of understanding थोड़ा सा कि आप पैदा कहाँ पर हुए और early life के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं. So I'm born in Peshawar, and raised in Peshawar. Originally I'm from Sawabi, गाँव से, but never lived there. So Peshawar में I think I was brought. Sawabi में कौन से गाँव से? सवाबी से मैं हूँ तोड़ेर से. अच्छा. तोड़ेर से, हाँ, स्मॉल टाउन. Right. उसके बाद my dad was being posted a lot because he was in the irrigation department. तो Swat, Kalam, all of that northern areas. Right. So I kept on hopping here and there, but I studied in APS basically. Right. So APS and then वही. It's like certain standard जो वहाँ APS वाला होता है वो maintain होता रहता है. तो it started off there, and then finally when he was close to retiring, we just moved to Peshawar back to our main house. So and high school भी APS से किया था आपने? High school मैंने PF से किया था. Once I came back to Peshawar, I moved from different schools to 2-3 hops किए मैंने, and then I moved to PF. Right. From 6th grade till college. और ये जो आपने PF में किया था FSC? FSC फेडरल बोर्ड. हाँ, बिकॉज मेरी ना वो पॉडकास्ट से बड़े लोग आते हैं कहते हैं कि यार आप A-levels वालों को बुलाते रहते हैं. सो आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि another take on the FSC there. FSC there. And so you went to Bahria after that? Yes. What year was this? This was 2009. Right. क्या पढ़ने के लिए? Business, BBA. BBA, standard. Standard. Thought क्या थी उसका क्या? Thought तो बिल्कुल ही I would say the last thing left in the option list है ना. So because my father was an engineer, he wanted me to move into the same direction, civil engineer. And I got my admission in ComSats initially. और engineering में? हाँ, engineering में, हाँ. Right. But then initially I got my admission in NUST, in computer engineering. So I mean, you're a smart chap. But then that was in the last list, na? Okay. Computer engineering. So Right. parents were like, that's not going to work. And now, if I had done that, I would have been in a different position right now. But, times change and fields change. So then I moved to ComSats. मैंने admission किया, and then मेरे एक दोस्त की फ़ोन आ गई, अल्लाह उसको बख्शे. उसने कहा, मुस्तफ़ा तुम्हारा admission हो गया है BBA में, बहरिया में. तो आ जाओ, नया शहर है ना. एबटाबाद में क्या करोगे ComSats में? मैंने कहा ठीक है. पहुंचा मैं, और पेशावर से इस्लामाबाद. That was my main, I think, the first big switch in my life. Right. But, I mean, from Peshawar and being all over KP, then going to Abbottabad for, I mean, थोड़े से गए होंगे मेरा ख्याल इसके बाद तो आ गया होगा. Few weeks. And then coming to Bahria ka BBA is very different. The culture is different. There's a ton of A-levels there, and वो भी Islamabadi को. Sat. So how was that? It was good. It was interesting. Very, I think, eye-opening. Right. Especially because I was moving for the first time out of my house.
Right. So that's a different thing itself. और फिर Islamabad was a big city for us because हम आते थे मतलब now I realize कि now it's just 1.5 hour away. Yeah. और हम शाम को जा सकते हैं वापस आ सकते हैं. बल्कि मैं पिछले 3 दिनों से यही कर रहा हूँ. राइट काम के लिए आ रहा हूँ जा रहा हूँ. बट उस वक्त ये था क्या वी यूज टू प्लान अ ट्रिप. ठीक है ना फैमिली के साथ आते थे यहाँ पे. एंड देन व्हेन आई मूव्ड हियर आई वाज लाइक इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. यहाँ पे तो इट्स 10 years ahead. ठीक है ना. तो गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. यूनिवर्सिटी में एक नया वो कल्चर शॉक भी थोड़ा मुझे था. मतलब हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू टू assimilate into that culture? यार अच्छा it took me like 1 semester I would say, not too much because back in Peshawar हमारा जो mental mindset था we were quite up to date with things over there. तो हमारी जो community थी वो थी तो we were quite up to Already आप काफ़ी हद तक बर्गर पॉलिश के साथ ही आए थे. बहुत साथ आ चुके थे. तो when we came here तो they couldn't spot a difference. Right. They used to tell me Mustafa तुम पेशावर से हो तुम्हारे एक्सेंट में वो क्यों नहीं है वो करेगा हम तो बैठेगा मैं कहा वो तो वैसे होता ही नहीं है. That's a different kind of a वैसे thing. तो I mean whenever I've gone to Peshawar and I've been in the Hayatabad वाली साइड तो वहाँ तो नेटिव उर्दू स्पीकिंग बड़ा है जो कि जिसका बिल्कुल भी आपका एक्सेंट नहीं मिलेगा. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो पार्टीशन से वो रह रहे हैं एथनिकली भी दे आर उर्दू स्पीकिंग एज वेल. Yes. Peshawar itself is obviously has been taken over by Pathans and Pakhtuns, but initially it was owned by Sikhs and local people speak Hinko. Right. Peshawar, that was the main thing. They call it Peshawar, not Peshawar. Right. And then now we call it Peshawar. है ना. तो अब वो बेसिकली पख्तून वो आ गया उसके अंदर थोड़ा सा. लेकिन ये कि जब आप पुराने शहर जाते हो तो यू वोंट फाइंड एनीवन के पुरानी सारी फैमिली जो हैं वो हैं दे विल बी स्पीकिंग इन हिंदको एंड प्रॉपर ठेठ 80 to C वो वाला सीन ना. अच्छा. Interesting. So you at what point did you start producing music? I would say as a group we changed our band's name a couple of times initially. वो तो कभी STM कभी क्या but Shumail was the main guy. He's still producing for us. He started it back from 2007. अच्छा. That was the first time I think when he downloaded the software. Right. उस वक्त Orchid था और Reverb Nation था और इस तरह की कुछ MySpace used to be a big thing. तो we used to तो we cracks download करके and then we used to experiment on it. So that was way back. I think 2007 was the time when he produced his first beat. Right. And then we just followed through after that. And but run me through a little bit about how it happened. Because उस वक्त आप होंगे I believe what FSC maybe metric. Metric. So what sort of music did you listen to? Did you stumble upon this thing कि यार ठीक है beats लगा के उसके ऊपर rap भी किया जा सकता है या generally music बनाई जा सकती है या कोई था कि यार you're listening to or are exposed to a certain type of music and you're like hey, listen like I want to make something like this in Pakistan as well. What was it like? I think उस वक्त तो मेन हमारी ऑब्वियसली वही जो वेस्टर्न कल्ट था फुल. तो वही ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट से सारी इन्फ्लुएंस आती थी. टूपाक बिगी दैट होल ग्रुप कॉम्पटन उन्हीं कुछ सुनते थे हम. बट हम थोड़े से फंकी साइड को ज़्यादा सुनते थे. उस वक्त था चेंगी वाज अनदर वन और Nelly. We used to listen to them a lot. Or I think inspiration वहीं से आई. Eminem was the main. I think Shakar and Shumail particularly loved Eminem. Right. Or I just followed what they were because they were very up to date with what the scene was in the West. In the West, huh? And this was these were your schoolmates? Yes. My class fellows since when I moved to PF. So I met them in PF. Yeah. Right. So 2007 you start producing music. उस टाइम पे तो जाहिर है कि early on must have been just like random जो समझ आया उठा के डाल दिया. At what point would you say you got to a professional level where you would probably produce something that you'd want a wider audience to listen to as well? I would say one thing that we decided on was because हमने शुरू ही ऐसे किया कि Shumail wanted कि he should learn and produce the beat himself from scratch.
तो वी नेवर यूज टू थिंक यार हमने कॉपी करना है कुछ. वी केप्ट ऑन राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो बट इट वॉज ऑल इन इंग्लिश. सो दैट वॉज आई थिंक the turning point was when we moved from English to Pashto. That was the main thing. Because English में हर मतलब वैसे तो बहुत कम रैपर्स कर रहे थे पाकिस्तान में. रैप सीन में बहुत कम थे. ये हमें पता था कि पाकिस्तान में बहुत कम कर रहे हैं. कुछ थे एंड देन वी फाउंड देम एंड देन वी कोलैब्ड एंड स्टफ अर्ली ऑन. बट जाहिर है कि उसकी मार्केट भी उस तरह से नहीं है ना, बिकॉज इंग्लिश में तो यूर एसेंशियली कम्पीटिंग, यूर सेइंग ओके पाकिस्तान में कोई नहीं है बट यूर एसेंशियली कम्पीटिंग विद एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट, बिकॉज वो भी अंग्रेजी बना रहा है, आप भी अंग्रेजी बना रहे हैं. पश्तो ऑन द अदर हैंड इज जस्ट अनडिस्कवर्ड ऑल टुगेदर. सो पश्तो आपने कब स्टार्ट की थी? हमने 2008-9 में आई गिव इट अ थॉट. आई टोल्ड माई बॉयज़ के हम शुरू करते हैं, पश्तो में भी कर सकते हैं. बट एट दैट पॉइंट दैट आइडिया वाज वेरी फ्रेश बिकॉज पश्तो में पहली बात चीज़ें इस तरह की होती ही नहीं है. अभी भी बहुत मुश्किल से हो रही हैं. लेकिन माई ब्रदर्स दे टोल्ड मी कि यार मुस्तफ़ा थोड़ा सा ना चीज़ी है ना, पश्तो में कौन करेगा, राइट? बट इन द एंड क्या हुआ कि when I came here then I wanted, because यहाँ पे भी वही सीन था कि पश्तो इंग्लिश एंड इंग्लिश चल रहा था. कुछ रैपर्स लाहौर में थे जो कि वो भी इंग्लिश में ही कर रहे थे. तो आई थॉट कि यार लेट्स गिव इट अ डिफरेंट टच. बिकॉज हमने कुछ कॉन्वर्सेशंस की थी, वाज वेरी फनी. मैं और शाहकार फ़ोन पे बातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे और बीच में मैंने कुछ सेंटेंस बोला, उसका राइम उसने बनाया, फिर मैंने बनाया, फिर उसने बनाया. एंड वी डिडंट रियलाइज़ कि हमने ऑलमोस्ट कुछ 8-9 बार्स लिख ली हैं, बोल दिए हमने. We kept on remembering it, but we couldn't remember it कि हमने क्या लिखा था. But I was like, if this is possible, let's just give it a try. Right. And those boys stayed in Peshawar for university? हाँ, initially. When I moved here, I think second semester में Shakar came in. He moved to ComSats. He's now an architect. अच्छा. So he followed architecture. Shumail was there because he got admission in UET for engineering. So he's an electrical engineer. ये UET Texila? Peshawar. Peshawar. So he was there. He was there. So he settled there. Us two boys came here. By that time, I had realized the potential of rap and stuff, or this Pashto rap thing in Pakistan. So I Shakar ko kaha let's work on it more and more. Right. So we started shooting our first music video in Margala Hills. और वही बहरिया में I had a friend Wajahat Ahmed Khan. Now he's Wajahat Ahmed Khan, I know him. Yes. Achha. X Productions. Yeah, absolutely, Yes. absolutely. So Shout out to Wajahat. Yeah. So that was his first project. अच्छा ज़बरदस्त. So बहरिया में ये बड़ा गुड सीन था यार आप लोगों का कि you had like a ton of folks जो कि different areas में थे and collaborate कर पाते थे. And a lot of I've spoken to a lot of folks from Bahria who've done incredible work. हम तो मैं फास्ट से CS कर रहा था, मेरे पास तो कोई मजाक ही नहीं होता था ना कि क्रिएटिव साइड पे कोई बंदा आ जाए, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता था. बट दैट वाज प्रीटी कूल. नहीं बहरिया में दैट आई थिंक मैं हब में आ चुका था जहाँ से टैलेंट निकल रहा था उस वक्त. और उस वक्त टैलेंट आई थिंक वो डिस्कवरी मोड में था. स्टूडेंट म्यूजिक सोसाइटी से जाती थी बातें एंड लोग मतलब यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल इन बिग प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ दैट हैव एक्स बहरिया एसेंशियली. Tell me about Pashto music, Pashto rap particularly. Pashto music तो बड़ी डाइवर्स है और and एक चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवर की थी कि उर्दू के बाद एक्चुअली पंजाबी भी उतनी कल्ट नहीं है जितनी ज़्यादा पश्तो है. सो आई रिमेंबर I just graduated, or maybe I graduated a couple of years. Gulpada came to Coke Studio and I don't remember her exact song, but it blew up and it was a big deal. And अच्छा मुझे पता नहीं था. और मुझे याद है उस सीज़न में गुलपड़ा भी आई थी और Zarsanga. There's this old woman who's apparently a legend. Yes. So I had a friend from D.I. Khan and when he found out about the fact that Gulpada and Zarsanga are in Coke Studio, his mind was blown. He was like, oh my god, like ये लोग तो बहुत बड़े legend. मैंने तो कभी सुना ही नहीं है. तो मैंने रैंडमली मैं गया, मैंने फेसबुक पे डाला तो मुझे याद है गुलपड़ा हैड लाइक 1.4 मिलियन फॉलोअर्स एंड नोबडी इन द मेन स्ट्रीम न्यू. और वो पश्तो गाती थी और उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोअर्स. सो दे हैव एन एंटायर इकोसिस्टम विद इन देमसेल्व्स एंड पश्तो इज ह्यूज.
और वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान को पता भी नहीं लगता. सो वो तो है, बट रैप के केस में अगर मैं आज का पूछूं तो व्हाट इज़ द इकोसिस्टम लुक लाइक? I think if you talk about Pashto rap, it's still the same. It hasn't changed much. Though initially depends on the time, and then it depends on what we did to it, and it all those factors come in. But initially when we started Pashto rap, हमारा aim that was an experiment, ठीक है. But what happened was हमने जब वो पख्तूनख्वा का हमने वीडियो बनाई, that was a live video, तो we didn't record that part because I was kept on convincing my team कि यार इसको record करते हैं, वो करते हैं. Because उससे पहले we used to record things on laptop का जो mic है शावर में, तो the thought of studio didn't come up. अच्छा, सो व्हेन यू से लाइव यू मीन कि बस वो एक कैमरा और रोलिंग पे है और उस पे आप साथ जो है बस वो रैप कर रहे हैं, वो लाइव बस वो एक सिंगल कट कैमरा ही रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ, और वही उसकी ऑडियो है, वही गाना है और दैट्स इट. वही है. अच्छा, तो क्या हुआ कि वी पुट ऑन द कैमरा, छोटा सा स्पीकर था हमारे पास, और उस पर हम सॉन्ग लगा के सुन रहे थे, बीट लगा ली और हमने रैप करना शुरू कर दिया. शाकार था, मैं था, टार वाज आल्सो देयर इन द वीडियो, तो हम सब वहाँ पे उस वीडियो में थे. और रिकॉर्ड होके घर आ गए. हमने कहा एक लाइव वीडियो नहीं बनती, रादर देन हम गाड़ी में बैठ के कैमरा करें तो एक लोकेशन पे जाके खड़े होके कर लेंगे, है ना. और उस वक्त क्योंकि उस वक्त कुछ और सॉन्ग्स आए हुए थे, करारा राशा, पश्तो में, वो सब पहाड़ों पे ही चल रहे थे, वाइब थी उस टाइम. वाइब थी. तो रिकॉर्ड करके जब घर आए तो वी जस्ट एडेड दैट, वो वोकल्स हमने ले लिए लाइव के, पीछे हमने थोड़ा सा म्यूज़िक तेज़ कर लिया, एक और ट्रैक डाल दिया, तो इट साउंडेड लाइव एंड नॉट लाइव, एंड इट वाज अ वेरी बिग कन्फ्यूजन. बट वी टॉक्ड अबाउट लोकल इश्यूज़ के, हमारी यूथ कहाँ जा रही है और ये वो ना. तो देन वी केप्ट ऑन परफॉर्मिंग, यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म करें, कभी कहाँ करें. इट वाज बिकमिंग अ बिग थिंग बिकॉज वी गॉट कॉन्टैक्टेड बाय अ एजेंसी पेशावर में, like youth agency, something, Peshawar Youth Agency, and they had a concert in Nishtar Hall. Nishtar Hall is like the main biggest, I think, concert hall in Peshawar. So we went there और वहाँ पे कॉल आया हुआ था, सोच आया हुआ था, they're big names, ठीक है ना. and then we got invited in that, तो हमारा वही ओपनिंग में जो आते हैं लिस्ट में नाम आते हैं. बट हुआ ये कि जब ओपनिंग कर रहे थे, so we were like the last artist right before the big one, and that's difficult to be in because that's where the crowd is chanting call, and you know, like fuck off the stage. Exactly. तो उसमें हम जैसे स्टेज पे आए तो the whole, like, it was jam packed. and मेरे उसमें कुछ लाइंस हैं, मैं कुछ बोल रहा था, उसके बीच में मैं बोलता हूँ कि मोरे मोरे, अम्मी अम्मी, है ना. right. वो जो गैप था, जब वो मोरे मोरे आता है तो वी जस्ट लाइक, हम रैप कर रहे हैं स्टेज पे लगे हुए, और जैसे वो बोला तो मैं चुप हो गया एक सेकंड के लिए, और पूरा क्राउड बोलता है मोरे मोरे. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अच्छा, थिंग हैज, इट्स गॉन आउट ऑफ हैंड्स. मतलब एवरीवन नोज दिस सॉन्ग, एवरीवन हैज सीन दैट वीडियो, बिकॉज उस वक्त जब वो 10,000 व्यूज़ तक पहुंच गया, that was a big thing. That 10,000 views was everything, right? That was like a million now. Yeah. Because in that 10,000, everyone in Peshawar knew us. Right. We couldn't walk out like normal people. It was very targeted following, ना, क्योंकि है भी पश्तो, तो it's not like कि आपको वो views कहीं सेंस से आ रहे हैं, वो ही आपको उस एरिया से आ रहे हैं. तो even at a point कि वहाँ से, I'm not sure कि रोज़न था या कॉल था कि उनका मेन आर्टिस्ट पीछे आया, और they were like, ये क्या हो रहा है ना, ये कौन है, जिनके पूरे रैप या पूरा सॉन्ग पता है उनको. लेकिन रैप was still not acceptable at that point. लेकिन अच्छा, when you say acceptable, what does that mean? मतलब is there like a stigma attached to rap? Yes, in I would say कि, and it's been like that now as well in KP side. मतलब Pakhtuns culturally or their attitude is that they're very resistant to change since beginning. So even if you see, मतलब now if you see Balochi artists doing things in big platforms, yeah, Sindhi, you will see acceptance there because they'll keep on promoting them and supporting them or chanting their, name and stuff. But in KP, there's still inner resistance hoti hai कि we should not
Let we go should of let go of the the- folk music. Right. Otherwise, if we accept this, we're changed. हमारे सब कुछ change हो जाएगा. हमारी Everything's सारी destroyed. philosophy हर चीज़ के खिलाफ हो जाएगा ये. So that was a big thing, and that's still a big thing right now, especially in terms of like accepting rap. What about the youth though? The youth is, I think that's Are they changing? now. Because थोड़ा सा इसी पे चले जाते हैं, because this is an interesting tangent, so I'm generally I go in a different way, but this time I'm just gonna jump right into it. रैप के अंदर हमने एक तो ये चीज़ देखी है कि आपने केपी क्या और पश्तो रैप की बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं था कभी इसके बारे में. और मैं जब भी लोगों से रैपर्स मल्टीपल टाइम्स प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आई हैव स्पोकन टू देम, तो मैं हमेशा मैक्सिमम मैंने नॉर्थ साउथ में डिवाइड किया. मैंने कहा कि यार पंजाबी में हम वाई आर वी लुकिंग लिसनिंग टू लेट्स से एपी डिलॉन और स्टफ लाइक दैट. वी नेवर रियली सीन ए मेन स्ट्रीम पंजाबी रैपर. लाइक वीव सीन बोहेमिया के बाद ऑब्वियसली वीव सीन के ठीक है रैपर्स हैं स्पोरेडिकली हियर एंड देयर, बट एक जो यंगस्टर्स लेवल एक्सेप्टेंस आ गई है ना, वो चीज़ अभी तक हमें नहीं नज़र आई अप नॉर्थ के आर्टिस्ट में. साउथ में क्या है कि साउथ के अंदर कराची के अंदर देयर इज़ अ पर्टिकुलर वाइब एंड दे वर एबल टू बिल्ड ऑन दैट वाइब. सो अगेन वो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि रैप इज़ ऑल अबाउट वाइब. सो इफ़ यू डोंट हैव द वाइब, यू नो, टैलेंट वैलेंट बात की बात है. वो ये नहीं है कि आतिफ असलम की आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि यार आई डोंट रियली केयर कि वो दिखता कैसा, मतलब कि बड़ा अच्छा दिखता है, बट दिखता है कैसा, वो किस तरह गाने भी मैं वो हो जाऊँगा. रैप इज़ रियली ऑल अबाउट द वाइब एंड the feeling of the artist and the aggression that the artist brings to the table. And a large part of that was coming from Karachi and the damage that had been caused in the city, and wo Layari underground and you know, like this lower middle income feel ke you know हमारे साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई और हम straight out of the hood, now we're here type of a feeling. And I understand that works, that resonates with your aggressive working class folk जो ये कह रहा है कि यार हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई, एंड विच इज़ वाई यू नो आई एम एंग्री एंड थ्रू दिस रैप आई एम टेकिंग माई एंगर आउट. And we've seen that happen all over the West as well, where African Americans were the first or predominantly were running this entire thing because they had been subjugated in certain way. अगर मैं कहूँ कि कराची को देखने के बाद अगर मुझे कोई रीजन पाकिस्तान का मिलेगा जहाँ पर मुझे रैप उभरती हुई नज़र आनी चाहिए है, वो केपी है. You know, devastated from the war on terror. They have absolutely enough reason to be angry, to be frustrated, and I would think कि वो rap को use करके there is an incredible art form that they can use to get their message across and really talk about a lot of things that they're you know upset over. Particularly slightly controversial, but you know we've seen KP के अंदर there have been movements recently जिसमें बहुत ज़्यादा वो you know बात करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, ये हुआ वो हुआ. एंड ग्लोबली जब इस तरह की मूवमेंट्स आती हैं, इस तरह की रिजेंटमेंट्स आती हैं, आर्ट हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल इन प्रोपगेटिंग दोस, राइट. सॉरी मैं बहुत बड़ा बयान दिया मैंने, बट अब मैं कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा था एंड आई एम गोइंग टू कम टू द क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक दैट हैजंट बीन एबल टू कन्वर्ट इनटू एक्चुअल? सो आई गेट इट, देयर इज इन टर्म्स ऑफ विद इन द कंज्यूमर देयर इज a lack of acceptability. तो पश्तो स्पीकिंग में तो lack of acceptability है, बट मे बी पश्तो बैक्ड उर्दू स्पीकिंग वाले लोग भी कम अज़ कम वो पश्तो फील सामने ला सकते थे. यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ. आप 2009 में आए हैं इस्लामाबाद, आपको चौकियों का टाइम याद होगा. यू नो वो उस पर पठान रुकता था, पठान पर ज़रूरत से ज़्यादा रुकता था. आप उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, आपको उतना नहीं रोका जाता था. तो एक चीज़ तो थी ना एट द एंड ऑफ द डे, एंड सो देयर वाज दैट एग्रेशन एंड वो नज़र नहीं आई. तो व्हाई डू यू थिंक दैट नेवर हैपेंड? I think okay, a lot of people obviously started traveling to KP in the last few years because of some Australian or some American tourist taking that bet ke she went there and took a picture on the boat in Attabad Lake and things changed. It just took one white girl to go there and change things, and now the whole Pakistan is going to north. ठीक है ना? तो ये एक चीज़ बड़ी वो है कि लोग बाहर से जब कोई आ जाता है ना, people follow that a lot. Right. Even मतलब the artists that are very big here have made their name outside Pakistan, probably in India or
and then they've come back and now they're big. Right. So for us, I think the way it worked was we got famous, we got our name outside Peshawar first, Right. and then it started going back into Peshawar because we kept on getting concerts and shows and acceptance from Islamabad, Pindi, and then it went to Lahore, and then in fact it's level पे पहुंच गया कि back in 2011 and 12 we kept on doing concerts in Faisalabad and Multan on Pashto rap. And when I used to go there, people remembered our verses and songs and everything. That's interesting because I wouldn't think that there's a lot of Pashto-speaking population in Peshawar. In Faisalabad. Faisalabad. Yeah. But when I went there, like there were like billboards or wo cheezein, I couldn't. It was a shock to me initially, na कि okay, a good shock, but I think हमारा movement तो वहीं से शुरू हुआ. Okay, now we have to spread it even more. ठीक है ना? पेशावर में on the other hand वही bubble के अंदर फंसे हुए. The people over there were a lot like वो अभी भी उस phase में कि वो जो the kind of music that Gulpana does or the folk, because she has been safe because she has kept that folk thing alive. Right. And the typical Pashto thing. Anyone who has changed has not been accepted. So, and the thing is that folk kind of thing doesn't have aggression in it. Right. That's all about... It's all sweet and... Sweet, roses, gulab, you know, क्या है, लाड शाह पे खबर तक कमीज तो मतलब तो काली कमीज लेके आओ, गुलाब लेके आओ, वो फूल, तो वो उस सेंस में वो चीज़ वहीं पे रह जाती है. नो, एंड आई थिंक देव बीन थ्रू सो मच दैट दे डिडंट वांट टू इवन वो क्या था कि क्राई अपॉन इट बाय लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स एंड स्टफ, है ना. तो नोबडी केप्ट इट अ focus. Rap genre itself helps you express a lot more things than a folk singer would do in Pashto. And the grammar in Pashto is very hard. Right. So Urdu is very detailed. There's a lot of mix and they can play with words. But with Pashto, it was very hard. So I think it took us like, I think 4 or 5 years to actually get a grasp on Pashto rap because we created it. So we were the first ones who actually made that rhyme and, you know, fast bolna hai, tez bolna hai, sense it should make sense and stuff. So it was quite hard. And also you didn't have anything to follow essentially. No, nothing. There was no reference of how Pashto ke andar rap ki ja Now we have the Bible of Pashto rap. From there onwards, now things are changing. We decided कि यार अब now we need to talk about Pakhtuns, our culture. That was initial thought, but it took some time. और अब ये है कि I think from the last 3-4 years we have started to actually genuinely play with words in a way कि हम proper thoughtful चीज़ें निकाल सकते हैं. At that point we were still in that वो एक fun party zone. We wanted to show the fun side of Pashto rap and stuff. Right. लेकिन अब it's different. Things have changed. What do you guys talk about now? मतलब our topics vary, but right. मेरा तो आजकल फोकस यही होता है कि अगर थोड़ा जनरलाइज सिचुएशन ऑफ पेशावर, पाकिस्तान, अस एज पाकिस्तानीज ह्यूमन बींग्स मैं पोर्ट्रे करूँ कि क्या है. बिकॉज एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट बन चुका है पाकिस्तान के नॉर्थ साइड के बारे में. और इसको चेंज करने का हमारा एम, शाकार, शुमाइल एंड मी, वी लाइक दिस हैज़ बीन आवर एम सिंस 2009. राइट. ठीक है ना. टू चेंज दिस होल थिंग बिकॉज वी वर again, people would still think that we have that accents and stuff and like that, but the communities that we have brought up in Peshawar, while I was staying there, while I'm talking to people every now and then, I have never seen anyone in that accent. Right. So for us, it was never like that. Peshawar was up to the mark with everything जो कि बड़े शहर और भी थे. ठीक है ना. तो मतलब मैं एक टाइम आ गया कि when I went to Karachi to meet my friends over there, everyone was like, मुस्तफ़ा तुम्हारा जो outfit है, you don't look like you're from Peshawar essentially. I'm like, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है. मतलब आओ कभी चक्कर लगाओ पेशावर, तुम लोग को चेंज नज़र ही नहीं आएगा. इट्स द सेम थिंग. लेकिन मीडिया ने जो एक इमेज बनाया हुआ है, तो मीडिया has changed a lot of things for us, है ना. Right. Whatever they used to show, and that divide stayed in Pakistan. So you already have that divide कि people don't visit Pakistan, but then we
visiting each other within the Pakistan. Yeah, that's So true. that was very strange for us. Yeah, I think media though definitely has done a job there, but to be very honest, as an Islamabadi, I mean, I was essentially not born but bred in Islamabad, 94 till date. Before 2013, I didn't know much about KP at all, and I don't know if that was at the cost of becoming slightly political here, but I don't know if that was because of PTI के जो PTI वाले थे upper middle urban जिन्होंने देखा कि यार उनकी गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई तो they started taking interest in Peshawar. But before that, it was always the only news that ever came out was terrorism and religious fundamentalism. Two very separate things. Terrorism in itself is a separate thing, and then religious fundamentalism के वहाँ तो बड़े कंजर्वेटिव से लोग होते हैं, बड़ा ट्राइबल सम सेटअप होता है, एंड फॉर मोस्ट पार्ट मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में आपको यही सुनने को मिलता था. मैक्सिमम आप थोड़ा सा डाउन साउथ चले जाएं, कराची चले जाएं, तो वहाँ पर सर्टन बिजनेसेस थे जो पख्तून लोग चलाते थे, तो उनकी वो एसोसिएशंस डेवलप थी उन चीज़ों के साथ. बट एज सच ना आपको कल्चर के बारे में पता था, ना आपको किसी और चीज़ के बारे में पता था. फिर उसके बाद जब वो पता लगना भी शुरू हुआ तो मैक्सिमम ये हो गया कि अच्छा जी केपी के अंदर पहाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, नेचर है और हाँ और रबाब है. एग्जैक्टली दैट्स द एक्सटेंट ऑफ इट, राइट. एंड टू बी ऑनेस्ट अब ये है कि केपी इन इटसेल्फ थोड़ा सा समझ आना शुरू हुआ है, तो जीबी के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है कि जीबी में पहाड़ियाँ हैं, वहाँ आप जाते हैं, बर्फ़ देखते हैं, enjoy करते हैं आप. मैं I recently spoke to someone from Gilgit Baltistan and they were like, dude, like we have entire communities, like we have an entire world there. Exactly. And like we want to talk about so much more than just water and hills and so on and so forth. We're bored of that. But unfortunately we don't. And so this is very interesting जो आपने बोला कि there's a lot of that culture beyond the clash and cough and the wo that needs to be introduced to the rest of Pakistan. And unfortunately we haven't been introduced to it. I know that you're in Australia now. How does that work in terms of your musical journey? It has played a big part in affecting things for us. But again, when I graduated here, so I got a job locally in an IT company. But the thing is that my parents always wanted कि यार मैं एक ये मास्टर्स वाला जो स्टेप है वो कर लूँ. And I don't know why people do that here, because वहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो कि सही कॉन्सेप्ट है. When you study when you do masters after bachelor's, you don't do masters straight away. You work and you understand what you really want in history and that's it. And then after like a couple of 4-5 years, then you do something so that like you can actually understand what's the next step after that. Yeah. But over here it's like, okay, because obviously the economy is so harsh here, you can't land on a job straight away. So then that's another excuse. Yeah. Okay, you need to have 3 more degrees after that so that you're on a bigger the position that people can actually prefer you. So us chakkar mein halaki I got the job straight away after like 2-3 months after my graduation. But that was not acceptable to our parents. So they're like, Mustafa, you need to go outside and get some exposure or wo padho. And then suddenly the person who hired me, he's like, okay, if you want a promotion down in the next 1 or 2 years, we can only promote you if you have a master's degree. So then I was like, okay, I'll come back with a master's degree and then I'll be promoted. So then that was, I think, the initial thought of me jumping out of Pakistan and moving to Australia. Right. But then things changed because I was actually running from accounting. I hated accounting. Wait. Yes. So you're a financial analyst. Yes. And you hate accounting. Yes, I hated accounting to guts. And because of the experience in my learning here, barrier. Right. It was a big thing here. They made it harder for us to understand because I was a yes or no person, but they were no, yes, no. You have to follow the scripts of the book. Right. ठीक है ना, रट्टा सिस्टम, राइट कि यस या नो नहीं,
लॉजिक लॉजिक ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा है वही करना है. एंड दैट ब्लॉक्ड माई विजन एंड व्यू ऑफ ओके हाउ थिंग्स वर्क एंड वो. हालांकि इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फील्ड, अ ड्राई फील्ड, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग. द होल कंट्री इज रन थ्रू इट, ठीक है. बट देन आई वाज इन द मीन टाइम आई स्टार्टेड मार्केटिंग. मैंने मार्केटिंग में BBA कर लिया और आई गॉट माई एडमिशन इन मार्केटिंग बैक देयर. तो and then once I moved there, one of my friends told me, Mustafa, if you want to do this, मतलब अगर accounting, finance में करना, there's more exposure and there's a lot of fields here. There's a big demand. So I shifted to finance, and then it was not that difficult. Achha. For us, I think Pakistanis, we're used to doing 6 units a semester. Right. Internationally, they just do 4. Right. So it was already a piece of cake when I didn't have to do 2 extra units a semester. So it went well. So after that, I think once I got ingrained into that culture, I wanted to stay there because I got very good opportunities there. I started with Apple. Right. And I worked through it. That broadened my whole view of the world even more. And then I was like, okay, I'll just, I think, pursue this career more. Right. And yeah, it's been good so far. Right now you're a financial analyst? Yes. What does that entail? What is a financial analyst? So I'm doing financial analysis, but at the same time I'm doing a bit of I'm looking after lending and investments and home investments as well. Right. For a bank, for the same bank. So we're just, I think, particularly right now I'm looking after like the home investment, that side, lending side more, because that's booming right now. So since the last, I think, 2-3 years, property, anything close to property is going up in Australia. So then I wanted to shift my field slowly and try to get used, like, because that's big right now. Banks are closing, outlets are closing, and everyone is going digital now. So and there's this new void that people had to fill for mobile banking and mobile financial advice and like that. So now I'm moving to that sector. That's interesting. With the fintech and all of that, essentially. What part of Australia are you at? I'm in the capital, Canberra. How is that? Islamabad. Achha. Exactly like Islamabad. शुरू में तो I got a bit of a shock कि मैं पहुंचा तो when I landed 2015, मुझे लगा शायद धोखा हो रहा है मेरे साथ. प्लेन घूम के वापस ही मुझे वहीं पे लेके आ गई है. Because the architects that worked to build that and design that city were the same architects who worked for Islamabad. Achha. So instead of 7th Avenue, that is called the what's it called, Anzac Parade Avenue. And उस तरफ पे War Memorial है जहाँ पे हमारा Parliament House है. और इस तरफ पे F10 की साइड से कुछ और suburbs शुरू हो जाते हैं. It's very very similar. And then there's Margara Hills, so it's also a valley. Right. Beach में. So but our like I think our valley is much more beautiful than that. They've got very short hills. Right. So यहाँ पे तो you've got majestic mountains at the back. Zabardast. थोड़ा सा मैं वापस लेकर आऊँगा towards rap and obviously now that you're so far away from your core team who's basically producing some of that music, so how does that work? Are you still producing while you're in Australia, or do you take some time off, come to Pakistan, record and then go back? Initially when I went there, there was a big gap. वो जो हमारा rhythm चल रहा था till 2012 when we were like in one of the big leagues. That stopped straight away because obviously वो सारी management operations सारा change हो गया. And then I had to study there, so I devoted my whole time to that. That 2 years were gone. Completely lost. Yeah. And I think that void was being filled up here in Pakistan by rappers here. Right. And वो जो initially groundwork कुछ groups ने यहाँ पे किया था, वो कुछ और लोग लेके आहिस्ता से जा रहे थे. But we vanished. And then once you vanish from music industry for like a year or so, you're gone. Especially in a fast pace like this. तो वो जो जनरेशन हमारी थी उनकी फिर शादियाँ हो गई, उनकी फिर यूनिवर्सिटीज़, और वो फेज में चले गए. नई जनरेशन को पता ही नहीं था कि ये कौन है, राइट. तो वो एक गैप आ गया. दैट अफेक्टेड अस अ लॉट. बट देन आफ्टर आई थिंक when I graduated 2017, I came back and like the rappers who were following us now had become very big. Right. And I met them and I was like, okay, Mustafa,
टाइम टू गेट बैक इनटू द गेम. और क्योंकि अब हमारे 10 साल हो चुके हैं, राइट, मैं स्ट्रगल के, तो 10 साल को हलाल करना है. तो आई कॉल माई बॉयज एंड लाइक लेट्स गेट बैक इनटू द गेम एंड सीन में वापस आते हैं, रैप शुरू करते हैं. वी केप्ट ऑन प्रोड्यूसिंग स्टफ, ऑडियोज एंड स्टफ, तो मोस्टली साउंड क्लाउड पे था. बट थिंग्स चेंज सो मच हेयर. मतलब आई थिंक यू वुड हैव मच मोर आइडिया यहाँ पे. Spotify came in, or I mean, post COVID is just it's just blown up. We had a sort of dry patch where just Coke Studio existed, and that was the epitome of musical success. But then COVID happened, and then Insta and YouTube and Hassan Rahims of the world, and they just make music, put it up, and it's blowing up, right? So I think we're at a very interesting time in Pakistan when it comes to music, and वो एक fan base proper. मैं rap की अगर बात करूँ तो पूरी communities हैं जहाँ पर जी वो discuss हो रहा है कि उसकी beef क्या चल रही है और इसमें क्या है और इसकी talent कैसा है, and I think it's getting fairly mature now at this point in time. How do you see the difference between some of the different regions जहाँ पर different rap हो रहा है? जैसे हमने पहले बात की कि KP के अंदर जाहिर है कि आपने कहा कि लोगों का वो पर्टिकुलरली जो पश्तो स्पीकिंग है उनका एक चेंज से रेजिस्टेंस है, विच इज़ वाई देर नॉट एक्सेप्टिंग उस तरह से अभी. बट देन वी सी कराची के अंदर बहुत ज़्यादा रैप उठा. लाहौर में समहाउ आई सी दैट मिसिंग. पिंडी में बड़ा अच्छा रैपर निकल रहा है. हाउ डू यू सी द एंटायर लैंडस्केप एंड इंडस्ट्री? आई थिंक जहाँ से अगर मैं थोड़ा पीछे जाके अगर देखूँ, रैप उठा इस्लामाबाद से था. अच्छा. A lot. मतलब it started because the whole, okay, I'm talking about 2009. Right. 8, 9, 10, 11, 12. The only rappers we knew were from Islamabad. The only rappers that made it biggie. There were a few rappers who actually went to Hollywood and did collabs and came back. वो level बहुत तेज़ी से जा रहा था. And I think 2012, 2013 में we saw I think groups from Karachi doing it, and then a few groups from Lahore doing it and like that. But initially I think the hub for hip hop and rap scene was here because every single concert was happening for rap. यहाँ पे openings में rap का एक यहाँ पे culture ज़्यादा था. हालांकि you won't expect that from here because they're all, I would say, burgers यहीं पे थे सारे, ठीक है. उन्होंने हसल देखा ही नहीं था, ठीक है. बट यहाँ पे एक अलग किस्म का एक रैप के टॉपिक्स थे, थोड़े वॉनबीश किस्म की चीज़ें थी. अच्छा, ये चीज़ मैंने जनरली, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बट ये चीज़ मैंने अक्रॉस इंडस्ट्रीज देखी है. इवन अगर मैं सोशल मीडिया, मेरा ताल्लुक सोशल मीडिया के कंटेंट साइट से है. इस्लामाबाद वाज द फर्स्ट वन. उस्मान खालिद भट्ट एंड कुछ खास बनाता होता था और पूरा पाकिस्तान देखता था. कुछ खास, यस. Somehow Islamabad is always at the forefront of innovation. They just don't know how to mainstream it. And they're so disconnected from the masses कि वो क्या करते हैं कि वो गोरे से चीज़ 2 मिनट. अच्छा, इस्लामाबादी एक तो उसकी जो ग्रोइंग अप इंस्पिरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया होता है. सो वो वेस्टर्न मीडिया सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और उससे वो इंस्पिरेशन लेकर वो उसको लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं. सो बिकॉज इट्स इनोवेटिव, इट जनरली टेंड्स टू, इन अ वेरी पर्टिकुलर group of people, it tends to really blow up and get that early traction. But then, I mean, I've seen way too many artists, musicians, singers, creators in Islamabad in their mid-30s who are now, mid-30s, they're coming back and they're saying कि हमने वो start किया था और अब देखो ज़रा ये बच्चे from Karachi कहाँ से कहाँ निकल गए. And this is across industries. And I find it, आपने वो बड़ी अच्छी बात बोली कि मैंने जो उसमें आइडेंटिफाई किया वो यही किया कि वो बर्गरनेस थोड़ी सी थी, वो डिस्कनेक्शन थी फ्रॉम द मैसेज, कि वो अपने बबल में रहे. वो इस्लामाबादी बड़ा टैलेंटेड आर्टिस्ट होगा लेकिन वो मेटालिका के गाने सुन के बजा रहा है, या कौन सुन रहा है पाकिस्तान में मेटालिका, एंड कराची वाला जो था वो भी शायद मेटालिका सुनता होगा, लेकिन उसने जाके उसको रियली बॉलीवुडाइज किया और वो टिकटॉक पे लेकर गया और उसने उसको उठा के उस पर कर दिया. यही आई वाज कमिंग टू दैट कि मतलब जो चीज़ कराची में लोगों ने की उसका ये था कि दे ब्रॉट इट टू अ लोकल लेवल कि मतलब एक रिक्शा वाला भी सुनेगा, वो भी रिलेट कर सकेगा उस हसल के साथ. वो तो ऑब्वियसली दैट्स द माइंडसेट ऑफ वो उन आर्टिस्ट का कि जिन्होंने ये सोचा कि एंड दे थॉट द राइट वे. आई थिंक दैट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट फर्स्ट एंड देन गो एट द हाईएस्ट, बिकॉज द हाईएस्ट विल एक्सेप्ट इट एनीवे. ठीक है, तो
things I think picked up from there कि Karachi से and then Karachi and Lahore they're so massive and so heavily populated and the other thing is कि वहाँ पे जो general आवाम है they're mature. They've matured enough. They've accepted all sorts of things and diversity and so they can accept those things. तो वहाँ पे ये भी एक फैक्टर है कि चल जाती हैं चीज़ें बिकॉज वहाँ पे एक तो परसेंटेज बहुत है लोगों की और फिर लिटरेट लोगों की और वो सारा वहीं पे यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पे वैसे ही बहुत एक डिस्कनेक्ट था you're right. और फिर केपी साइड पे ये था कि the people haven't matured in that genre. Pashto का rap या R&B I think they have to slowly move to R&B first. उसके बाद फिर वो बीट को समझेंगे and but the thing is कि अभी मुझे लगता है कि things have changed a lot. I can see a lot of new rappers coming in from Peshawar who are totally doing it in Pashto. Could you name a few that you find have a lot of potential? I don't know the particular names, but I know that there are quite groups, a few. There are groups playing up. In fact, I'm doing a meet and greet kind of a thing in a couple of days where I'm expecting that those people would turn up because like they have been looking to us, like they've been looking up to us. और हमारे वही जो बाइबल लिखी है तो उसी को फॉलो कर रहे हैं just like Bohemia kind of a thing. So we're sort of like the Bohemias of Pashto rap. So they're trying to follow that thing, but I'm very intrigued and I'm excited to see कि क्या चीज़ें निकलती हैं down in the next couple of years. But because I wanted this to happen, and the problem is when we got the chance to do something और एक movement शुरू करें उस वक्त मैं निकल गया पाकिस्तान से. That was the main time because 2012 was the point that we were actually spreading out everywhere. But then when I left, so there was a halt in the whole process. और अब अच्छी बात है because वो लोग अब हमारे पुराने सॉन्ग सुनते हैं या वो जो और सारे रैपर्स हैं वो एक इंडस्ट्री तो बन गई है ना अब तो now everyone is getting interested in this new genre. So it's a good time for them to bring up Pashto rap and then that will make the whole industry for us, a local industry up there, and it will be accepted. Do you think with national brands like Peshawar Zalmi, for example, we're going to see more of KP being nationalized as well? Because or vice versa, do you think कि KP के अंदर फिर वो finally change, much required change आएगा? Because वो हो ही रहा है कि individuals building that change is always frowned upon कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे पागल हो गए but Javed Afridi really driving that change with a lot of pop and इस तरह की चीज़ suddenly becomes the new normal. Do you think these brands do actually end up doing good in terms of pop culture and innovation? Do you think they've so मैं अगर Peshawar Zalmi को लूँ for example and you're from KP, how much of an impact do you think that has made in helping that community evolve? A lot I would say in every sort of thing pretty much. I think Javed bhai has done miracles with his Zalmi franchise. Overall I think वही perception पहली बात तो change हो गई okay these guys, and he has invested heavily. Like when he was doing a project with us, that was our first branded project with Peshawar Zalmi. And that made like waves in the industry, especially that was the first season one, right? That was season 2020 2020 का season था 3 or 4 I think 3 which season is this 7 so it was I think 5 season 5 so but the thing is that made waves and that changed a lot of things for us and पूरी view बदल गई. मुझे दूर से लोग फ़ोन कर रहे थे कि यार मुस्तफ़ा ये क्या किया है हिप हॉप पहाड़ों के बीच में से कैमरास आ रहे हैं और घोड़े हॉर्स राइडिंग हो रही है अचानक से रैपर्स आ जाते हैं वो फुल ऑन पश्तो में रैप करते हैं ये क्या हो रहा है ये कब पेशावर ये कौन सा पेशावर है and I think one of the great things that he's done and he's done it continuously barring this year he did work with Zani Khan Durrani as well but I think one of the things that he's really worked on is he's gotten talent पत्थर उठा के really खुरच के जाके talent ढूंढा और उसको मेन स्ट्रीम किया. I remember even last year Abdullah Siddiqui, who eventually came on Forbes 40 under 40 or 30 under 30 and then now he was on Coke Studio as well.
most people in Pakistan discovered him from Peshawar Zalmi. Yep. And वही वाली बात है कि I think he has that art of or has a stellar team that can really find out. But what was it like for you guys? Who reached out to you? How did they find you to actually go and represent Zalmi in that way? I think locally though, like the general public knows, and the general artists, that whole Community community, they knew, Right. they know us because it's been 15, Yeah, 16 years now. But वही बात है कि there was no requirement for rap in brands and stuff. So when there was a requirement, people wanted, okay, to he said, okay, let's bring something new. Yeah. The whole, I think his management had a big role as well, because they wanted Pashto rap in it first somehow. Right. And then क्योंकि उस वक्त rap इतना mainstream नहीं था. नहीं था. This is 2 years ago. Yeah. तो that was I think the first anthem जिसमें रैप हुआ था. हाँ बिल्कुल. On a franchise. Yeah. उसके बाद PSL के franchise पे रैप हो रहा था. हाँ. तो उसने कहा कि उन्होंने obviously हमें कॉल किया, उन्होंने कहा मुस्तफ़ा आप लोग रैप शैप करते हो पश्तो में, रैप शैप ठीक है ना करते हो, और क्या चीज़ कर सकोगे, यू नो. ये हमने लास्ट टाइम हमने किया, कॉल नहीं किया है. माहिरा खान, जुनैद एंड द होल टीम डिड देयर पार्ट, एंड this time we wanted to try something new. You guys are new boys, and you know, we would love to have your taste in it. So we came up with the whole thing. And पाकिस्तान में जनरली ये होता है कि जब चीज़ चाहते हैं वो लोग, उनको 2 दिन में चाहिए, लेकिन जब चीज़ करनी है तो टेक्स months and months, है ना. तो they said कि मुस्तफ़ा we want something in 2 days. Now I was in Australia, और मैं ऑफिस में था. मैंने बॉयज़ को फ़ोन किया, मैं कहा ये सीन है और कुछ पश्तो में करना है, बट इट्स आवर टाइम टू शाइन, है ना. लेट्स मेक इट बिग, लेट्स मेक समथिंग दैट वी वांटेड टू मेक, है ना. एंड दे केप्ट ऑन गिविंग अस रेफरेंसेस ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स, एंड वो हमने कहा कि नहीं, लेट्स ब्रिंग सम ओरिजिनलिटी टू इट, लेट्स पुट रबाब इन इट, बीट शीट, और लेट्स अगेन वो था कि उर्दू में करना है. Right. तो आई थिंक द टीम वॉज वेरी सपोर्टिव, बिकॉज व्हेन वी टोल्ड देम कि यार let's just not do it in Urdu at all. Let's give it, put it completely in Pashto, ताकि हम आराम से रिलेट कर सकें, लोग सुन सकें, समझ सकें. और वहाँ से जब आएगी तो एक यहाँ से तो वैसी एक्सेप्टेंस होगी. तो हमने बनाया, आई थिंक 2 दिन के अंदर हमने, वेबस्टर हैज़ डन मार्वल्स इन व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ. उसने 2 दिन में किसी रबाब वाले को बुलाया, उसने रिकॉर्ड करवाया पेशावर में, ही मेड द होल बीट, और हमने रिकॉर्ड करके भेज दिया, एंड दे वर ब्लोन अवे. And you guys produced it all by yourself? Yes, everything from scratch. They wanted us to come to Pakistan and record whole things in. Where's the remainder of your team? They're in Peshawar. They're in Peshawar. Right? So Shakar is in Islamabad. Shumail is in Peshawar. So, but I recorded my bit there. They recorded it here. रातों रात हमने बनाया, 2 दिन में हमने sample भेजा इनको, and they were like, they had some other samples as well. They're like, side पे करो इनको. But that's again Javed bhai and the whole team ke they wanted to they took initiative ke let's give it a try, because a lot of people fear to accept. बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना यार, पश्तो में क्यों करते हैं, उर्दू में करें, नेशनल एक्सेप्टेंस होगी. उन्होंने अपना ब्रांड का वेट लगाकर पश्तो को नेशनल एक्सेप्टेंस दी, rather than the other way around. Exactly. You know. तो उन्होंने जब वो चीज़ आई था, मेरा सबसे बड़ा फियर ये था कि यार ओके, ये लोग अब ये ना बोल दें कि इट्स रिस्की. They took that risk, and they were quite afraid. जब launch हुआ, they were calling me, they were calling चिदर, मुस्तफ़ा चल जाए बस ये चल. मैंने कहा चल जाएगा. मैंने कहा ये एक ऐसी चीज़ है कि it's fresh, it's new. Fresh. Yeah. और वो ऐसा हो गया कि इंडिया, मतलब every single वो reactions आ रहे हैं, मतलब दौड़े लोग आ रहे हैं कि यार ये क्या चीज़ है. So who did the music video? The music video I remember was very cool as well. Yeah. Hassan Dawar. Right. Crazy guy. Yeah. Very talented, very young. I think he's actively there now. He's active. वो तो सारे उसके सारे वही कर रहा है. I think after that project, they were sold. He's sold, done. Zabardast. Mustafa, we're at the 56-minute mark. I try to wrap it up around in an hour. I'm just gonna ask you one last question that I generally ask all of my guests. And you've been in Pakistan, Peshawar, Islamabad. You've roamed around as well, performed in different cities. उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, जाहिर है कि वहाँ पे भी आपने देखा कि वहाँ का कल्चर कैसा है ओवरऑल. Knowing what you know now, seeing what you've seen over your time in Pakistan and Australia, how would you see Pakistan 30 years from now in 2050? I would say
it is progressing on a different pace right now. And Do you believe that? Okay, Yes. pace has changed? yes, Acha. I think on a human level, people are changing now. उनका mindset change हो रहा है. They're accepting a lot of things now. Obviously, एक मुल्ला कल तो है हाँ. और एक other political side है, लेकिन youth itself is very aware. Right. And I think social media is playing a positive role somehow in that as well. So they are taking their own initiatives. Startups खुल रही हैं चीज़ें. ये तो मैं बाहर से देख रहा हूँ, बाहर से, क्योंकि यहाँ पे बैठ के समझ नहीं आती. मतलब मैं हर साल चक्कर लगाता हूँ प्रोजेक्ट्स की चीज़ों के लिए. each year I come in, there's things so have much changed. more happening. Yeah. Peshawar is, I'll start from Peshawar. Peshawar has changed tremendously from I think if you go to Peshawar now, there's no difference between Peshawar or Lahore. It's Achha. completely advanced. अच्छा. Because मैं अपने दोस्तों को लेके जा रहा था ये इस इसी ट्रिप में. मैंने कहा क्या पेशावर जाते हैं, हम रास्ते में ड्राइव कर रहे हैं. मैंने कहा कि अभी ये मैं एयरपोर्ट से लैंड हुआ हूँ, हम दोस्त सारे जा रहे हैं पेशावर गाड़ी में. मैं कहा क्या मैं तुम लोग को यहाँ खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा ना, चक्कर वक्कर मारेंगे, वो करेंगे. एंड आई मूव देयर. द मोमेंट आई एंटर्ड, मुझसे रास्ता ही लॉस्ट. एवरीथिंग वाज चेंज. मैं कहा ये कौन सा पेशावर है, राइट? थिंग्स हैव चेंज. ठीक है. पीपल आर टेकिंग इनिशिएटिव्स एंड स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस एंड मतलब they have evolved a lot from the last, I think, in the last decade. Right. And I would see if it picks up like that, keeping in mind what political party comes in, how they tend things. If it keeps on evolving the way that it is. I think if it stays on the same track, slowly, I can see Pakistan on a different level, more connected to the world. In a positive way? In a positive way. I hope that happens, and I hope it's true. Mustafa, thank you so much for coming in. This was very, very insightful, and you have this incredible soft-spoken personality that really calms the other person down. I don't know if it's reflected on camera, but I mean, यहाँ पर ना मैं बड़े सुकून में बैठा हूँ because the way that you speak, it's very beautiful. I'd like to appreciate that. But thank you so much for coming in and sharing all the insight. Thank you so much. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो दोस्तों यहाँ से जरूर शेयर करिए. यूट्यूब वाले लाइक कर देना, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. फेसबुक वाले नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके टीबीटी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब कर बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. इसी के साथ साथ इजी पैसा जायज़ कैश यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Zamil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.